evening. Agenda is coming to you live from a pet cafe here in the capital. And the reason we chose this as our location for today's show is because when we woke up this morning, we woke up to shocking visuals, which we'll just play out for you right now. Over the last 6 days in Bihar, 200 Nilgais, who we all thought as endangered species, endangered animals, and we were thrilled to see a Nilgai here in the capital in Vijay Chowk. So a lot of concerns about the environment have been there, but the news coming in from Bihar of 200 Nilgais being shot to death, just being killed by hired people, by the government, by an order of the government of India. And what's happened is, because of that order coming out, a story has now become the biggest story. A fight within the government, a division within the government between the Environment Minister Prakash Javadekar and the Women and Child Development Minister, someone who's known for her fight and her campaign for animals, Maneka Gandhi. Just take a look at how they hit out against each other. Maneka Gandhi called it a lust for killing. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ हर स्टेट को लिख रही है कि आप बताओ किसको मारना है, हम इजाजत दे देंगे। बंगाल में उन्होंने कह दिया कि हाथी को मारो, हिमाचल में उन्होंने कह दिया कि बंदर को मारो, गोवा में कह दिया मोर को मारो। अब कोई जानवर में छोड़ने के, और चंद्रपुर में जहाँ इतना अनर्थ हो रहा है, उन्होंने अभी 53 जंगली सुअर मारे हैं और 50 की और इजाजत मिली है। और जो हुआ है बिहार में, ये पहली दफा है कि इतना तगड़ा मैसेकर हुआ है। कानून के आधार पर जब किसानों को बहुत तकलीफ होती है, उनके फसल का पूरा नाश होता है, तो अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजती है तो ही हम किसी विशेष भाग के लिए और किसी विशेष काल के लिए ही एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए वो राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। ये केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये कानून पहले से बना हुआ है। And as you can see in our audience, we have a special guest as well, a husky there, because this is a pet cafe. And as I said, the reason that we are coming to you live from a pet cafe today, Agenda is coming to you, is because just all of these people, and Malika runs it, all of these people, they all care about animals. And before I go to our special guest, you wanted to say something as just someone who has a pet and who cares about animals. You have a strong opinion about this culling? Go ahead. Yeah. I'm actually very surprised with what's been happening. It's a shocker, having so many animals sort of killed. I think it's a matter of sensitivity from the government's perspective to say an order sort of passed on just without no thought. Like monkeys, as in there's no sort of divide, not to sort of say that monkeys can be a nuisance and a Nilgai won't, but Nilgai, 200 Nilgais, endangered species, it's a joke. So not supposed to happen. I don't think this should be continued across India at all. Yeah, so what you're saying, and what's your name? Jason. Jason. And what Jason is saying perhaps covers a lot of what all of us who are just watching it on TV feel as well. And so let me just introduce some of our panelists here today. We have joining us from Mumbai, Purva Joshipura, who is the CEO of PETA Rights Group, and we also have the other side from Hyderabad. We have S. Jaipal Reddy. He represents the farmers organization. He's the MAC Society president of the Warangal, Telangana state. So let's just hear from Mr. Jaipal Reddy first. Mr. Jaipal Reddy, I wanted to ask you, the minister has said very clearly that they have allowed this kind of killing of animals, different animals in different districts of the country, because that's what the local people want. However, Maneka Gandhi has pointed out that when the Nilgais, who I know a lot of farmers say Nilgais are a real menace to crops, but Maneka Gandhi points out that the killers, the people who were brought in to shoot the Nilgais, they were from Andhra Pradesh. So if it is the local community who were protesting, who were upset with the Nilgais, how is it that they weren't part of the culling process? Yeah, I am Jaipal Reddy.
am a Kisan. Sir, I am appreciating our minister who is protecting the farmers' issues. Sir, today as a farmer, I am facing a lot of problems with the wild boars and monkeys. Now, at my place there is no blue bull. Yeah, but sir, I am telling, since so many years we used to writing to the member of parliaments to save our crops from monkeys and wild boars. इतना मेरा फसल को इतना खरीफ करते, I think a lot of food crops are spoiling. See, not only the insects and fungicides, but this also come into the spoiling our fasal. So there is no alternate. So people are saying that by catching and giving doing the vasectomy, this is nobody is doing. Okay, vasectomy is a good thing, but nobody is coming forward to that one. Not only the fasal, not only the crop damage. Mr. Jaipal Reddy, I understand your point of view. I want to take that to Gauri Molekhi, who is joining us from the capital as well. Ms. Molekhi, you heard what Jaipal Reddy putting the farmer's perspective there for us. She's the person he's the person who, that's what the government of India is also saying. So Purva Joshipura, how do you respond to what the farmers are saying, like Mr. Jaipal Reddy said? Well, ecological balance simply cannot be restored through the barrel of a gun. It's just not the scientific way of doing it. Killing some wild animals is simply going to leave a void that other animals fill. So what we need to do is find real scientific, humane solutions, genuine solutions to this, which means town planning has to include forest protection, project planning has to include forest protection. The government needs to work with farmers and scientists in coming out with solutions such as fencing, noisemakers, or using natural repellents such as chili plants, which has been found to work in Africa as a great way of combating the conflict with elephants there. So where there's a will to find a correct and humane and actually effective solution, there's a way to do it. Okay, and we have Neeraj Kumar as well from Patna joining us. नीरज जी, सरकार का यही कहना था कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है. हम लोग सारे यहाँ पे आपने हम लोग we are just trying to okay, I'm just trying to see if that we can have Mr. Neeraj Kumar there on the line with us. But Jaipal Reddy, you heard what Ms. Joshipura said. Do we have Neeraj Kumar? I think we do have Neeraj Kumar. Sorry about all the technical problems. नीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहती है, सरकार का ये कहना है कि आप लोगों ने कहा है नीलगाय को मारने के लिए. देखिए, इस संबंध में किसानों ने आंदोलन किया और माननीय उच्च न्यायालय पटना ने 2010 में एक आदेश दिया कि केंद्र सरकार इसको गंभीरता से विचार करे इस सवाल पर. और बिहार के 28 जिले बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित है. फ्लडेड एरिया है हमारा, सुखाड़ होता है. तो हमारे पास ऑप्शन आप देखिए, इसमें दो बातें हैं. पहला, एक तरफ वो बेजुबान जानवर है, दूसरे तरफ किसान हैं. वो किसानों की जमीन, अब उनकी जमीन पर खेती हो और वो नीलगाय उसके हवाले चला जाए, आखिर रास्ता क्या है, ये तो विचार करना होगा. वो ओपन लैंड है, कोई फॉरेस्ट एरिया नहीं है. अगर जिनको ये चिंता आज हो रही है, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अभी भी समय है. उन नीलगायों को ले जाकर करके आप बोटेनिकल गार्डन में, जियोलॉजिकल गार्डन में डाल दीजिए, उसमें हमको कोई परेशानी नहीं होगी. लेकिन किसान परेशान है और राज्य सरकार ने तमाम प्रयास किए. मैं ये पूछना चाहती थी, बिहार में नहीं है जी. नहीं,
जी बताइए। नहीं, मेनका जी का ये कहना है सर, मेनका जी का ये कहना है कि अगर वो लोकल, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि लोकल्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोकल्स को परेशानी हो रही है, लेकिन आप लोग लाए हैं मारने के लिए आंध्र प्रदेश से लोग, क्या ये सच बात है? बिल्कुल, वो नेशनल राइफल एसोसिएशन के हैं, वो बिहार सरकार ने भी उनको लाइसेंस दिया है। वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, विभिन्न स्टेट में उनकी सेवा ली गई है। तो अगर बिहार के लोगों ने सेवा ली तो ये कौन सा गुनाह है? और मैं माननीय मेनका गांधी जी से ये जानना चाहता हूं, आप मंत्री हैं, 1 दिसंबर 2015 के बाद हमको ये सुविधा दी गई बिहार के किसानों को, अब तक आपकी जुबान क्यों नहीं खुली थी? आपकी जुबान खुलनी चाहिए थी। और मैं तो ये निवेदन करूंगा माननीय मेनका गांधी जी से, आप आइए मोकामा, हमारा तो घर है वहां, हम ससम्मान आपकी विदाई करेंगे और उस नीलगाय को ले जाकर के अपने बंगले में रख लीजिए, उसको चिड़ियाघर में रखवा दीजिए। किसानों की जो परेशानी है उस पर अगर विचार किए बगैर केवल भावनात्मक मुद्दे पर इन चीजों को ले जाना, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। किसान और वन्य जीव दोनों के बीच संतुलन बनना चाहिए, और कौन सा रास्ता है ये हम जानना चाहते हैं। तो कोई और रास्ता नहीं है। और आप ये भी कह रहे हैं, क्या आप ये गलत कहेंगे कि लोकल्स जो हैं वो मारना नहीं चाहते हैं? क्या आप कहेंगे कि उन सबकी समर्थन थी, वो मारना चाहते थे? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, वो नीलगाय 100-150 की संख्या में रहते हैं। एक सामान्य आदमी तो सामना भी नहीं कर सकता है जी। और उसको मारने के लिए गोली चाहिए। तो क्या अवैध हथियार से ये काम करेगा किसान? वो लाठी से तो होना नहीं है इसको, ये गोली चलेगा तो क्या किसान के लिए संभव है? किसानों की जो आर्थिक स्थिति है और उनके पास आर्म्स नहीं है, उनके पास लाइसेंस नहीं है, कैसे ये संभव है? या तो उसको आप जंगल में ले जाइए, फॉरेस्ट एरिया में, तो 1,06,000 हेक्टेयर का मैडम वो इलाका है, और एक फसल होता है, वो एक फसल, वन क्रॉप, उसी पर डिपेंड है लोग। 3 महीना पानी रहता है वहां, फ्लडेड एरिया है। तो आप समझिए, उसकी पीड़ा को भी समझने की जरूरत है। कौन सा रास्ता है? 25-30 वर्षों से लोग परेशान हैं, कोई उपाय नहीं लग रहा है। पटना हाईकोर्ट ने भी इस पर संबंध में ऑर्डर किया। किसान आंदोलन कर रहे हैं इस सवाल पर कि मेरी फसल लूट जा रही है, हमारा क्या रास्ता होगा? और इसका रास्ता हमारी जानकारी में तो कोई ऐसा मेडिकल साइंस अगर डेवलप हुआ है कि उसकी ब्रीडिंग को रोका जाए, कौन सा रास्ता है? कोई रास्ता तो है, होना चाहिए।